Good evening and warm welcome to the special edition monthly market strategy. Historically, September has been a negative month for the US equity markets, while it has given positive returns for India. Therefore, we need to be cautiously optimistic in this market. If the market moves towards the bullish side, it will positively overcome on any events that may determine the major trend of the market for the next few months. This will also help Nifty to cross the levels of 20,000 below which the market is consolidating since last almost 2 months. So it was the thought. Now let's analyze why the market closed in August with losses of over 3%. Although GST collection, PMI, auto dispatches, jet fuel, and coal production all showed improvement, the market closed lower. Today, Amit will explain what exactly happened in August that caused the downturn in the market sentiment. Additionally, other team members will share their top ideas, top picks for the month, and I will provide a macro view and strategy for the month of September. So over to you, Amit. Thank you, Shrikant. I will just share the presentation first. Sure. Is the presentation visible? Yes. Yes. Full screen कर दो. Good evening, everyone. This is Amit Agarwal here, and I will take you through today through the September month market strategy. Firstly, we will discuss how global indices performed in the month of August 2023. Equity markets globally displayed weakness during the month of August, especially Fitch के डाउनग्रेड करने के बाद यूएस को फ्रॉम AAA to AA+. तीन कारण थे कि फिच ने यूएस को डाउनग्रेड किया है. फर्स्ट है राइजिंग डेट, सेकेंड है डिक्लाइन इन गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स एंड पोटेंशियल, एंड थर्ड रीजन है पोटेंशियल ऑफ अ रिसेशन. 10-year बॉन्ड यील्ड्स भी काफी राइज हो चुके हैं इस महीने में अप टू 4.3%, which is highest since November 2007. Nifty 2.4% नीचे था during the month of August 2023, while Dow fell around 1.9%, S&P fell 1.5%, and the Nasdaq lost around 1.9%. वर्स्ट परफॉर्मेंस था हांगकांग का, जो गिरा है almost 8.5%, which was followed by losses from Shanghai and Singapore. Some of the emerging markets which did well and were resilient was Indonesia and Thailand with a small positive, while markets like India and Taiwan corrected between 2 to 3%. Now, let's look at the sectoral indices, how different sectoral indices performed during the August for India. अगस्त में सेक्टोरल इंडाइसेस बीएसई के जो रियल एस्टेट, ऑयल एंड गैस, बैंक्स, एफएमसीजी, auto were among the biggest losers, declining between 1 to 5% during the month, while sectors like healthcare, telecom, IT, industrials, capital goods and consumer durables were in positive zone. कैपिटल गुड्स का एक की रीजन है कि वो क्यों चला है इस महीने में, क्योंकि during the month there was robust growth in order inflows and revenues. ऑटो भी परफॉर्म कर रहा है ऑन एक्सपेक्टेशन ऑफ रिकवरी इन वॉल्यूम्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी, व्हाइल आईटी परफॉर्म कर रहा है with a belief that the worst is over for the sector in India. Now let's look how some of the developed economies are facing challenges today. यूएस में 10-year yield है जंप हुआ है हाईएस्ट लेवल ऑफ 4.3% सिंस नवंबर 2007. इन्वेस्टर्स इन यूएस डबल सोच में है कि यूएस इकोनॉमी आज भी काफी रेजिलिएंट है, प्लस इन्फ्लेशन भी काफी स्टिकी है. तो जो फेड की जो मीटिंग हुई थी, ये दोनों ही फैक्टर सेंट्रल बैंक को फोर्स कर सकते हैं कि टू कीप द इंटरेस्ट रेट्स हायर फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम.
फेड का जो लेटेस्ट मीटिंग हुआ था मिनट्स में ये दिखाता है कि पॉलिसी मेकर्स फेड में डिवाइडेड है ओवर द नीड फॉर मोर इंटरेस्ट रेट्स, विद सम सेइंग कि इट इज द रिस्क टू द इकोनॉमी। फेड की जो नेक्स्ट मीटिंग है वो है नवंबर सितंबर 20 तारीख को, जो डिसाइड ऑन रेट हाइक। In July last time, Fed increased rates by 25 basis point to 5.25 to 5.5%. अगर यूरोजोन में देखें तो यूरोजोन में भी इन्फ्लेशन काफी ऊपर आया है अगस्त में, अराउंड 5.3%, जो कि एनालिस्ट एक्सपेक्टेशन से काफी ज्यादा था। फूड प्राइसेस एक मेजर ड्राइवर था इन्फ्लेशन का। लेटेस्ट फिगर्स ये भी बताते हैं कि इन्फ्लेशन 26 महीनों से अपने जो यूरोपियन सेंट्रल बैंक का जो टारगेट है उससे 26 महीने से इन्फ्लेशन उस टारगेट के ऊपर चल रहा है। Now ECB will be, that is European Central Bank, will be meeting on September 14 and announcing whether it is raising rates further or not. यूरोपियन बिजनेस एक्टिविटी भी काफी डिक्लाइन हुई है इन द मंथ ऑफ अगस्त, विद द कंपोजिट परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स इन यूरोप came at 47 in August from 48.6 in July, which is the lowest since November 2020. चाइना में भी काफी स्लो डाउन दिखने को मिल रहा है लास्ट कुछ महीनों से। इस महीने में चाइना में डबल डिजिट ड्रॉप दिखाया है इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स, विच इज वर्स्ट परफॉर्मेंस सिंस फरवरी 2020। इस ये फॉलो हुआ है वर्स देन एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस फॉर चाइनीज इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, विच इंक्रीज ओनली बाय 3.7% इन जुलाई ईयर ऑन ईयर। और रिटेल सेक्टर है वो भी काफी स्लो मात्रा में बढ़ रहा है, अराउंड 2.5% ईयर ऑन ईयर। सबसे ज्यादा कंसर्निंग जो चाइना में है वो है हाउसिंग मार्केट, विच इज शोइंग साइंस ऑफ कंप्लीट स्टैग्नेशन। दो बड़े चाइनीज कंपनी एवरग्रैंड और कंट्री गार्डन आर एक्सपीरियंसिंग मैसिव स्लोडाउन और पोटेंशियल कैंडिडेट्स है इंसॉल्वेंसी के लिए। ओवर टाइम हमें लगता है कि रिसेशन का कंसर्न्स है ग्लोबल डेवलप्ड इकोनॉमीज में। ग्लोबल इक्विटीज इसी के वजह से गिर रहा है और इसी के वजह से इकोनॉमिक रिसेशन में जा सकता है। रिसेशन की वजह से डिमांड आउटलुक वीक होगा फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, और इट विल बी अ बिग नेगेटिव फॉर कॉर्पोरेट अर्निंग्स एंड इक्विटी। सो रिसेशन इज ब्रॉडली अ बिग नेगेटिव फॉर कॉर्पोरेट अर्निंग्स। अभी ये स्लाइड्स में हम लोग देखते हैं कि हैज इंडिया रियली डीकपल्ड फ्रॉम द वर्ल्ड और नॉट। इंडियन मार्केट्स का परफॉर्मेंस पास्ट कुछ महीनों में काफी स्ट्रांग रहा है डिस्पाइट ग्लोबल इश्यूज एंड वीक ग्लोबल मार्केट्स। हम लोग को लगता है कि ये आउट परफॉर्मेंस का एक कारण ये है कि इंडियन इकोनॉमी में लोगों को काफी बिलीफ है और इसलिए रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर पोजीशन में हमें ऐसा लगता है कि मार्केट्स, बट हमें ऐसा नहीं, मार्केट्स इंडियन मार्केट्स में डीकपल इन द शॉर्ट टर्म फॉर वॉट एवर रीजन, बट इकोनॉमिक लिंकेजेस इनएविटेबली विल रिजल्ट इन सम रिलेशन बिटवीन इंडियन एंड ग्लोबल मार्केट्स। अगर ग्लोबल स्लो डाउन आता है तो इंडिया में भी थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ेगा। सेकेंड मेजर पॉजिटिव इंडियन मार्केट्स के लिए कि जो पीएमआई है वो लेटेस्ट जो अगस्त का अभी आया हुआ है वो 58.6 है, विच इज 3 मंथ्स हाई। ये नंबर काफी वाइब्रेंट पिक्चर दिखाता है फॉर इंडियन मैन्युफैक्चरिंग लैंडस्केप। रोबस्ट एंड एक्सीलरेटेड ऑर्डर्स है, प्रोडक्शन काफी स्ट्रांग है, और ये हमें लगता है कि ये सेक्टर सेकेंड क्वार्टर का जो जीडीपी नंबर आएगा उसको काफी स्ट्रांगली सपोर्ट करेगा। थर्डली है कि जीएसटी कलेक्शन काफी स्ट्रांग है इंडिया में। अराउंड 1.5 लाख करोड़ आया है अगस्त का, एंड इट हैज बीन अराउंड 1.6 लाख करोड़ फॉर द लास्ट 4 मंथ्स एंड सो। स्ट्रांग कलेक्शन गवर्नमेंट के एफर्ट्स को बूस्ट करता है कैपिटल एक्सपेंडिशन के लिए, और ये रिफ्लेक्ट करता है कि इकोनॉमी काफी स्ट्रांग है। बैंक क्रेडिट भी काफी रेजिलियंट है। इट केम इन एट 19.7% ईयर ऑन ईयर एज ऑन मिड अगस्त टू 148 लाख करोड़, विच इज हाईएस्ट इन अबाउट 10 years। ये प्राइमरली आया है बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक एक्टिविटी, इंक्रीज वर्किंग कैपिटल डिमांड एंड राइजिंग स्पेंडिंग्स।
पर्सनल लोन और सर्विस सेक्टर का काफी बड़ा योगदान है क्रेडिट ग्रोथ में, बट इंडस्ट्रियल क्रेडिट ग्रोथ इज स्टिल ऑन द लोअर साइड। हमें ऐसा लगता है कि लिक्विडिटी, टाइट लिक्विडिटी और हायर इंटरेस्ट वजह से आगे जाके क्रेडिट ग्रोथ काफी स्लो हो सकता है। एक इम्पोर्टेंट नंबर इस क्रेडिट ग्रोथ आउटस्टैंडिंग का है कि हाउसिंग का जो आउटस्टैंडिंग है हाउसिंग कम सेक्टर को, वो दैट रोज बाय ऑलमोस्ट 37.4% ईयर ऑन ईयर इन द मंथ ऑफ जुलाई 2023, क्रॉसिंग रुपीज 24.3 लाख करोड़। इम्प्रेसिव लोन ग्रोथ इन द रियल एस्टेट सेक्टर फंक्शन है लार्ज स्केल डिमांड रिवाइवल अक्रॉस बोर्ड इन द सेक्टर। Housing sales in India's top seven cities have reached a second peak in the second quarter of CY23 with over 1.15 lakh units sold, giving a growth of 36% year on year. So रियल एस्टेट सेक्टर का जो एक बैरोमीटर है इकोनॉमी का, वो काफी रेसिलिएंट है इंडिया में। तो हमारा ये अनुमान है कि इंडियन इकोनॉमी विल कंटिन्यू टू होल्ड वेल। वी बिलीव दैट इंडिया इज बेटर प्लेस कंपेयर टू ग्लोबल इकोनॉमीज एंड इवन ऑफरिंग इवन अदर इमर्जिंग मार्केट्स। ऑन अ ब्रॉड बेसिस हमारा एस्टिमेट है कि जीडीपी ग्रो होगा 6.2% से इन FY24 एंड 6.3% इन FY25। Now let's look at some of the positive and recent positive and negative news for Indian economy. एक मेजर जो नेगेटिव आया है वो है कि टिल 1 सितंबर क्यूमुलेटिव रेनफॉल वाज 11% बिलो लॉन्ग टर्म एवरेज। जो एल नीनो फिनोमेना है दैट डेवलप्ड इन जुलाई हैज रिमेन्ड स्ट्रांग and has affected rainfall in the month of August due to changes in weather conditions. आईएमडी ने अभी प्रेडिक्ट किया कि एल नीनो मॉडरेट होगा थोड़ा सा सितंबर में, उसकी वजह से मानसून थोड़ा सा पिकअप हो सकता है, बट उसके बाद फिर से स्ट्रांग हो जाएगा टिल द मंथ ऑफ दिसंबर। So this is a big negative news for food and vegetable prices, which is one of the key contributors to the inflation. Second major negative news इकोनॉमी के लिए है कि जुलाई का जो ट्रेड डेफिसिट है इट हैज वाइडेंड टू अराउंड $21 billion. Oil oil imports is relatively stronger around है or to non-oil exports, and we believe the deficit may widen going ahead. हमने रिसेंटली अपवर्ड किया है हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट एस्टीमेट टू अराउंड 1.4% ऑफ जीडीपी फ्रॉम 1% ऑफ जीडीपी। Q1 नंबर्स भी इतने स्ट्रांग नहीं थे विद ऑटोमोबाइल्स एंड कंज्यूमर स्टेपल्स शोइंग नो विजिबल रिकवरी इन रूरल डिमांड, एंड आईटी सर्विसेज का नंबर्स भी इतना अच्छा नहीं था डिस्पाइट आवर मॉडेस्ट एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द सेक्टर। On the positive side for the economy, Q1 FY24 में रियल जीडीपी ग्रोथ का नंबर्स काफी स्ट्रांग आया है एट 7.8%। ग्रोथ ब्रॉड बेस्ड था विद इन्वेस्टमेंट ग्रोथ कंटिन्यूइंग टू आउटपेस कंजम्पशन ग्रोथ। हम लोग एस्टिमेट कर रहे हैं कि डिमांड कंडीशंस शुड रिमेन स्ट्रांग इन नियर टर्म एज फेस्टिव सीजन इज अप्रोचिंग। ग्लोबल डिमांड भी इतना वीक नहीं है जितना हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि जीडीपी ग्रोथ पर अभी पीक हो गया है और ग्रोथ रेट यहाँ से ग्रेजुअली टेपर ऑफ होगा। एंड अनदर इम्पोर्टेंट पॉजिटिव न्यूज फॉर द इकोनॉमी इज स्ट्रॉन्ग सिप फ्लो, दैट इज सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। रिसेंट डेटा सजेस्ट करता है कि जो मंथली इनफ्लोज है वो अबाउट 15,000 करोड़ है पर मंथ, एंड सच फ्लोज सपोर्ट द मार्केट इन केस ऑफ आउटफ्लोज बाय एफआईआई। ये टेबल बताता है कि हाउ स्ट्रॉन्ग एफआईआई फ्लोज हैव बीन। द फ्लोज हैव इंक्रीज फ्रॉम 4,300 करोड़ per month in FY17 to around 15,000 crores per month in Q1 FY24. Our assessment suggests that the SIP AUM has grown annually uh, by 30% in the last 6 years, which is twice as growth as the overall mutual fund industry asset base. Most mutual fund players believe that SIP per month can reach up to 20,000 crores per month in the next 3 years. So बड़ा support है market को retail investors से. Now let's look at how an Indian inflation and monetary policy action by RBI.
रिटेल इन्फ्लेशन जुलाई 2023 को बढ़ा है अप टू 7.4% फ्रॉम 4.8% इन जून। इन्फ्लेशन में बड़ा कंट्रीब्यूशन था वेजिटेबल्स का, जो बढ़ा है अराउंड 32% ईयर ऑन ईयर। अगर आप वेजिटेबल्स को अलग कर दे तो सीपीआई इन्फ्लेशन वाज 5.4%, विच इज ओनली 20 बेसिस हायर देन जून। अगस्त में एक पॉजिटिव ये हुआ है कि हाई फ्रीक्वेंसी पॉइंट्स ने ये इंडिकेट किया है कि वेजिटेबल प्राइसेस थोड़ा सा सॉफन हो रहे हैं, स्पेशली टोमेटो एंड कॉलीफ्लावर। बट जो सीरियल्स है, पल्सेस है, ऑयल्स है, उसमें प्राइस में उछाल देखा गया है। ऑन द कॉन्ट्ररी, जुलाई कोर इन्फ्लेशन मॉडरेट हुआ है बाय 22 बेसिस पॉइंट टू 4.9%, बट सीक्वेंशियली इंक्रीज हुआ है 0.4%, प्राइमरली बिकॉज ऑफ एजुकेशन कॉस्ट, recreation, amusement, and health related costs. July the WPI inflation also saw 1.36% contraction, which is followed by contraction of 4.12% in June and contraction of 3.48% in the month of May. So there is uncertainty from weather conditions. हमें ऐसा लगता है कि जुलाई इन्फ्लेशन ट्रांजिएंट है और टेम्पररी है फॉर 3 रीजन। सप्लाई साइड इश्यूज नॉर्मल हो रहे इन कमिंग मंथ्स, खरीफ सोइंग पिकअप हुआ है और सप्लाई साइड में गवर्नमेंट का इंटरवेंशन है। हम लोग एक्सपेक्ट करें कि इन्फ्लेशन सेकेंड क्वार्टर ऑफ FY24 में बढ़कर 7.3% हो जाएगा कंपेयर टू आरबीआई एस्टिमेट ऑफ 6.2%। बट हमें ऐसा लगता है इन्फ्लेशन लास्ट क्वार्टर ऑफ FY24 तक 5% तक हो जाएगा इसमें। इसलिए हम लोग एस्टिमेट कर रहे हैं कि जो आरबीआई है वो लंबे तरह तक पॉज रखेगा इंटरेस्ट रेट्स पे, कीपिंग एन आई ऑन इन्फ्लेशन। हमारा एस्टिमेट है कि सीपीआई इन्फ्लेशन would be around averaging 5.6% in the entire FY24. Now let's look at the valuation and give an outlook. इंडिया का जो मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो काफी रीजनेबल appear करता है, but has slightly worsened in the past few weeks with steep increase in domestic food prices, sharp increase in global crude and also weak tax collection. हमें ऐसा लगता है कि inflation will stay at elevated levels in FY24 with spike in food prices. We believe that market cannot take the macroeconomic situation for granted, given upside risk in inflation and current account deficit and also balance of payment position. We expect CPI inflation to average 5.6 in FY24 and 4.5% in FY25. हमें ऐसा भी लगता है कि इंडियन मार्केट कुड सी अ पीरियड ऑफ कंसोलिडेशन आफ्टर द रीसेंट स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस. We are expecting EPS of 943 in for FY24 and 1078 for FY25 for the Nifty index. At 19,255, Nifty trades at a rich valuation of 19.4x FY24 and 16.9x FY25 earnings. Such valuations also suggest a lot of optimism amongst the investors with respect to volume growth in companies, profitability of companies, and also strong return ratios in medium term. इतने rich valuation में there is hardly any room or safety if there is any negative news coming in. So हम लोग expect कर रहे हैं कि profitability and returns of most companies to come under sustained pressure over the next few years, which will weigh on the rich multiples. इसलिए हम लोग investors को recommend कर रहे हैं कि थोड़ा सा stock specific रहे, select companies with good business model, strong corporate governance, healthy balance sheet, decent margins and return ratios. अगस्त में जो करेक्शन हुआ है निफ्टी में, it can be used to add quality stocks for long term perspective. We are also recommending investors to keep an eye on the global factors and inflation. Now this chart suggests that Nifty valuations are quite rich for the market. Nifty 12-month forward PE is almost one standard deviation above its long-term average. But लेकिन September to December can be positive for the markets with improvement in demand due to upcoming festive season. Some cooling of
food prices and recovery in monsoon in September as predicted by IMD. Q2 numbers जो अक्टूबर में फ्लो होना शुरू होंगे, that could be another thing to watch out for. Now this chart shows 1 year forward P of different economies. ये चार्ट में दिखाता है कि इंडिया इज क्वाइट एक्सपेंसिव emerging market trading at almost 18 times December 2024 earnings. It is followed by Thailand at 14.8 times, while other BRIC countries like Brazil, Russia, Indonesia, China trade between 7.5 to 12 times December 2024 earnings. Average for emerging markets is 11.3 times. While developed economies like Japan and US with expectation of earnings growth of around 10% in CY24 trade expensive at 17.9 and 19.2 times respectively, which is comparable to India. However, but एक important point note करना है कि India has always been trading expensive due to the high growth factor, और हाई वैल्यूएशन ये भी सजेस्ट करता है, ये भी रिफ्लेक्ट करता है स्ट्रेंथ एंड पोटेंशियल ऑफ इंडियाज इकोनॉमी. So we believe that current market conditions can be used to add quality stocks from long-term perspective. We recommend investors to keep a watch on global factors and be very stock specific. Post factoring in the above, we have identified 5 investment ideas for the month of September 2023. I will take you through Godrej Consumer from the list. We have an ad rating on Godrej Consumer Products with a target price of 1135. Godrej is one of the leading homegrown household companies. It is present in Indonesia, US, Africa and Middle East among other regions. गोदरेज कंज्यूमर का जो Q1 का नंबर था काफी हेल्दी था. देयर वाज 10% वॉल्यूम ग्रोथ इन इंडिया बिजनेस. This was aided by good and extended household insecticide season. There was also gross margin recovery of around 715 basis point to 57% in India, or there was also a 50 basis beat in standalone EBITDA margin. जो अंडरलाइंग परफॉर्मेंस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस था, जो इसमें इंडोनेशिया आता है, अफ्रीका आता है, यूएस आता है, मिडल ईस्ट आता है, also improved on expected lines. Management का जो turnaround initiatives है have started to yield results, which was partly aided by favorable externalities, that is correction in palm oil prices and a steady household insecticide season. GCPL का जो management है have reiterated its strategy, aspirations, expressed confidence on continued progress around Raymond acquisition, and guided high single-digit underlying volume growth and high teen EBITDA with for growth for FY24. JCPL would also invest around 900 crores over the next 18 months to expand capacity by 20%. GCPL has also retained its high EBITDA growth guidance for FY24. So growth margins काफी strong है, और हम लोग को लगता है कि GCPL will deliver around 15% EPS CAGR over the next 3 financial years, और हमारा ad rating है with a target price of 1135. That's it from my side. Over to Amarjit. Thank you, Amit. So हमारा next talk है LIC हाउसिंग फाइनेंस. सो अगर हम इस क्वार्टर में देखें तो सब सारे जो बैंक्स हैं, एनबीएफसीज हैं, वहां पे नेट इंटरेस्ट मार्जिन का प्रेशर रहा है और उसकी वजह से उनके अर्निंग में रिफ्लेक्ट किया है पूरा. बट एलआईसी हाउसिंग में ऐसी बात नहीं थी, क्योंकि इस ड्यूरिंग द क्वार्टर ऑन द ऑल पैरामीटर्स द कंपनी हैज आउट परफॉर्म. And if you see on the top line front, company has reported 1319 crore का profit, and that was a 40% growth year on year, which is above our expectation. और नीड्स देखेंगे, नेट इंटरेस्ट मार्जिन देखेंगे तो यहाँ पे काफी एक्सपांशन हुआ है, जैसे बताया कि काफी बैंक्स और एनबीएफसीज में वहां पे नहीं देखा गया है. सो यहाँ पे नेट इंटरेस्ट, बिकॉज ऑफ दैट नेट इंटरेस्ट ग्रोथ 37% रहा है, और विच इज सपोर्टेड बाय नियर फुल ट्रांसमिशन ऑफ हायर रेट्स. एंड ड्यूरिंग द क्वार्टर ग्रोथ लोन ग्रोथ भी अच्छा रहा है 8% का, और एसेट क्वालिटी
स्टेबल रहा है। तो ओवरऑल हमें ये कंपनी इस स्पेस में अच्छा लगता है, तो इसके लिए हमारा टारगेट है 550 का और बाय रेटिंग है। फॉर द नेक्स्ट स्टॉक, अरुण। थैंक यू अमर जी। हमारा नेक्स्ट स्टॉक है बिल्डिंग मटेरियल स्पेस में से, उसमें भी वुड पैनल इंडस्ट्री में से, जो कि है ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज। अगर आप ग्रीन प्लाई का बिजनेस मॉडल देखें तो ये और सेंचुरी प्लाई दोनों की प्लेयर्स हैं प्लाईवुड इंडस्ट्री में, ऑर्गेनाइज्ड मार्केट्स में इंडिया में। इनका जनरली दे ऑलवेज हैव बीन इनटू द प्लाईवुड इंडस्ट्री, अगर आप लास्ट 2 ईयर से देखेंगे तब। पर इन्होंने बहुत रिसेंटली अभी एमडीएफ सेगमेंट में भी एंटर किया है, Q1 में ही वो उनका नया प्लांट ऑपरेशनल हुआ है वहां से। Plywood industry में management this year they are looking at around 10% volume growth, which should be considered healthy given कि plywood industry और plywood market बहुत it's pretty much big as compared to other segment. I think the other key point that one has to look at is the MDF plant. Now this MDF plant में कंपनी ने बहुत बड़ा केपेक्स किया हुआ है। इसमें उन्होंने डेट भी लिया है, उन्होंने इंटरनल अक्रूवल से भी केपेक्स किया हुआ है। Q1 में ये MDF का जो प्लांट था ये ऑपरेशनल हुआ है। Q1 में रेवेन्यूज बहुत कम रहे थे बिकॉज यूटिलाइजेशन बहुत कम था ये प्लांट का। एंड दिस प्लांट विल बी यूटिलाइज्ड ओवर द कोर्स ऑफ नेक्स्ट, इनकी कैपेसिटी जो यूटिलाइजेशन है वो धीरे धीरे FY24 और 25 में इंक्रीज होगी और FY26 में ये फुली यूटिलाइज होने की एक्सपेक्टेशंस है। अगर आप Q1 देखेंगे तो MDF प्लांट में ऑपरेटिंग लॉस रहा था एंड वी एक्सपेक्ट कि वो ग्रेजुअली धीरे धीरे कम होगा, जिससे कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होगी। Q1 का कंपनी की प्रॉफिट्स MDF के प्लांट में भी बिकॉज की इसका इम्पैक्ट आया था लो यूटिलाइजेशन का, उसकी वजह से इम्पैक्ट हुआ था। बट Q2 ऑनवर्ड्स ग्रेजुअली हम देखेंगे कि इसकी वजह से जो ऑपरेटिंग एबिटा लॉस था वो धीरे धीरे कम होगा एंड देन इवेंचुअली दे टर्न प्रॉफिटेबल। एट द पीबीटी लेवल पर देखेंगे तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि नेक्स्ट ईयर से ये प्रॉफिटेबल होंगे एमडीएफ प्लांट में। MDF plant will give a good revenue visibility to the company because एक न्यू सेगमेंट है जो कि कंपनी एंटर कर रही है और इसकी वजह से रेवेन्यू ग्रोथ अच्छा रहेगा कंपनी का। और मार्जिन्स भी अगर आप MDF प्लांट के देखें तो MDF प्लांट के मार्जिन्स आर हायर एज कम्पेयर टू द प्लाईवुड, तो इसकी वजह से कंपनी के ग्रेजुअली मार्जिन्स भी इंप्रूव होंगे। नो एज आई टोल्ड यू कि ये प्लांट लेने के लिए कंपनी ने डेट भी लिया था बुक्स में। इनका लास्ट ईयर डेट इक्विटी वाज अराउंड 1.1 टाइम्स। वी एक्सपेक्ट कि उनका डेट ऑलमोस्ट अभी पीक पर है एंड ग्रेजुअली अगर कोई बड़ा केपेक्स अनाउंस नहीं करेंगे तो उनका डेट ग्रेजुअली कमिंग ईयर्स में कम होगा। वैल्यूएशन वाइज अगर आप देखें तो वैल्यूएशन स्टॉक ट्रेड हो रहा है अराउंड 15 टाइम्स पर 15 पी बेसिस पर। पर अगर आप सेंचुरी प्लाई देखें तो सेंचुरी प्लाई ऑलमोस्ट डबल टाइम्स से ट्रेड होता है, क्लोज टू 30 टाइम्स। सेंचुरी प्लाई एक इंटीग्रेटेड कंपनी है जहाँ पे काफी सारे बिजनेसेस है, जिसमें कि प्लाईवुड, MDF, लैमिनेट्स एंड पार्टिकल बोर्ड है। एंड दैट्स व्हाई ग्रीन प्लाई ट्रेड्स एट अ डिस्काउंट टू सेंचुरी प्लाई गिवन कि उनकी मार्जिन प्रोफाइल भी अच्छी है। But anyways, the valuations look attractive for Green Pie Industries at 15 times. और इसके अलावा हमने स्टॉक को वैल्यू किया 17 टाइम्स पर, FY25 EPS ऑफ 11.2 के ऊपर पे। Now going ahead, we are expecting the company to give 20% revenue growth FY24 में भी और 25 में भी। This would also be contributed because उनका न्यू MDF प्लांट चालू हुआ है। EBITDA level पे we are expecting around 30% growth this year and 30% plus growth this year और next year, दोनों years में 30% growth देखना है because we talked about कि margin expansion की expectations है। अगर हम पैट लेवल की बात करें तो FY24 में पैट थोड़ा फ्लैटिश होगा बिकॉज ये प्लांट का डिप्रिसिएशन इंटरेस्ट कॉस्ट काफी है, तो उसकी वजह से पैट में ये साल ग्रोथ नहीं आएगी। बट FY25 में वी आर एक्सपेक्टिंग अ वेरी हाई पैट ग्रोथ फॉर ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज। सो वी लाइक द स्टॉक, हमारी इस पे एड रेटिंग है और फेयर वैल्यू 190। ओवर टू पूर्व। तो फार्मा स्पेस में से जो स्टॉक चुना है वो है सन फार्मा। अगर इस स्टॉक के बारे में बात करते हैं तो इनके अगर सेल्स हम देखें तो ये की रीजन्स जो जहाँ से इनका सेल्स ग्रोथ आता है वो है इंडिया, US और ROW एंड इमर्जिंग मार्केट्स। सो द बिजनेस इज डिवाइडेड 1/3 ईच इन ईच सेगमेंट। मैनेजमेंट का गाइडेंस अगर हम देखें तो उन्होंने गाइड किया है कि हाई सिंगल डिजिट का ग्रोथ करेंगे, यानी कि 7 to 9% का। बट हमें लगता है कि ये गाइडेंस उन्होंने काफी कंजर्वेटिव दिया हुआ है। उनकी जो पाइपलाइन है प्रोडक्ट्स की US के लिए वो काफी रोबस्ट है, तो हमारी एक्सपेक्टेशन है कि जो इनका स्पेशलिटी सेगमेंट है वो ऑलमोस्ट 12 to 14% से ग्रो कर सकता है। डोमेस्टिक बिजनेस की जहाँ तक बात आती है तो फर्स्ट क्वार्टर म्यूटेड था, लेकिन अगले 2 क्वार्टर्स यानी कि Q2 और Q3 सीजनली स्ट्रॉन्ग क्वार्टर्स होते हैं।
तो यहाँ पे भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डबल डिजिट से ग्रो करेंगे। यूएस emerging markets and ROW markets भी अगर हम देखें तो globally we are doing much better compared to the developed markets। तो इन शॉर्ट अगर हम देखें तो सारे सेगमेंट्स जो है वो डबल डिजिट ग्रो करने वाले हैं। So that is why we feel there is an upside risk to FY24 guidance, and that the domestic business will recover much better in the upcoming quarters। इसलिए हमने क्या किया है कि जो टारगेट मल्टीपल हमने पहले 25 टाइम्स से वैल्यू किया था स्टॉक को, अभी उसको एक नॉच हायर करके 26 टाइम्स पे वैल्यू कर रहे हैं बिकॉज ऑफ बेटर डोमेस्टिक वैल्यूएशन। और इसलिए हम लोग ने स्टॉक का फेयर वैल्यू जो है वो भी अपवर्ड रिवाइज किया है, एंड द फेयर वैल्यू इज 1245 विद एन एड रेटिंग। दैट्स ऑल फ्रॉम मी, ओवर टू सुमित। नेक्स्ट स्टॉक वी आर रिकमेंडिंग इज रिलायंस इंडस्ट्रीज। हम उसको एड रिकमेंडेशन दे रहे हैं और हमारी फेयर वैल्यू 2600 रुपये है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मैनेजमेंट ने क्लैरिफाई कर दिया है कि इनके नेक्स्ट जनरेशन के मेंबर्स को ऑनबोर्ड किया है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे लिया है। तो बेसिकली न्यू ब्लड हैज बीन इन्फ्यूज्ड इन द कंपनी, वो हम काफी पॉजिटिव मानते हैं। अब 3 बिजनेसेस डिफरेंट तरीके से हो गए हैं, रिलायंस जियो सेपरेट, रिटेल सेपरेट और न्यू एनर्जी। रिटेल की बात करें तो इट इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज, और इसमें जो मेन ट्रिगर है वो फर्दर स्टेक सेल होगा जिसमें फॉरेनर्स इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर ये होता है तो वैल्यूएशन और अपवर्ड वैल्यूएशन पे होता है तो एक काफी पॉजिटिव होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए। फाइनली होने ये वाला है कि रिटेल का आईपीओ आएगा, वहां पे वैल्यू अनलॉकिंग होगी तो एग्जिस्टिंग रिलायंस शेयर होल्डर्स को काफी बेनिफिट मिलेगा। सेकंड, रिलायंस जियो है जो कि 5G रोल आउट होने वाला है टू ड्राइव मार्केट शेयर गेन्स। जियो एयर फाइबर लॉन्च होने वाला है इस मंथ में। सो ब्रॉडली इसमें भी काफी सारे ट्रिगर्स हैं आगे जो कि इसकी अर्निंग्स बूस्ट कर सकते हैं। फिर इसका जो कोर बिजनेस है O2C, so basically which includes refinery, petrochemical and upstream exploration activity। तो वहां पे कंपनी ने बहुत क्लियरली बोला है कि हम न्यू एनर्जी पे फोकस करेंगे, ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल सर्कुलर एनर्जी बिजनेस। उसका मतलब क्या है कि आज इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है इसमें, बट इवेंचुअली यही इसको काफी कैश जनरेट करेगा फ्यूचर में, बिकॉज ऑफ द स्केल और जो कॉस्ट पे ये प्रोड्यूस करेगा विल बी वन मोस्ट कॉम्पिटिटिव इन द वर्ल्ड। सो फार एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन बिजनेस है जो कि O2C के अंदर ही आता है। वहां पे प्रोडक्शन रैंप अप हो जाएगा 30 MMSCMD। इसका क्या मतलब है कि जो इसका ब्लॉक है वहां से गैस हायर प्रोड्यूस होगी, हायर गैस प्रोडक्शन से वॉल्यूम इंप्रूव होंगे, प्लस रियलाइजेशन भी इंप्रूव होंगे एज पर गवर्नमेंट गैस प्राइसिंग पॉलिसी। तो O2C बिजनेस का रेवेन्यू ग्रो होगा फॉर दिस रीजन ऑल्सो। और जब O2C की बात करें और रिफाइनरी की बात करेंगे तो JRM की तो बात करनी ही पड़ती है। तो रिफाइनिंग मार्जिन्स काफी हाई है एट दिस पॉइंट इन टाइम बिकॉज ऑफ सप्लाई डिस्ट्रप्शंस ग्लोबली। तो और विंटर्स, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स विंटर आ रहे हैं तो डिमांड ज्यादा ही रहने वाली आगे जाके। तो हायर रिफाइनिंग मार्जिन्स का पॉजिटिव इम्पैक्ट रिलायंस को मिलेगा। रिलायंस विल परस्यू विंड पावर जनरेशन, वो एक आगे जाके एक और ट्रिगर है कंपनी में। और एक ही विल सेटअप है बैटरी गीगा फैक्ट्री बाय 2026। इसका मतलब क्या है कि आपको ऑलरेडी आप आज अगर रिलायंस बाय कर रहे हैं तो काफी ट्रिगर्स के साथ बाय कर रहे हैं, जैसे कि रिलायंस का रिटेल स्टेक सेल होगा, उससे वैल्यू अनलॉकिंग होगी, जियो में 5G होगा, प्लस ये सब तो सबको मालूम है। बट गोइंग फॉरवर्ड इसमें जो ये पावर जनरेशन बिजनेस सेटअप कर रहे हैं और गीगा फैक्ट्री डाल रहे हैं बैटरी की, तो ये अभी आज नेसेंट स्टेज में बिजनेस है, बट फ्यूचर में दे कैन बिकम रियली बिग, और फिर वहां पे वैल्यू अनलॉकिंग होने के वापस पोटेंशियल क्रिएट होंगे। तो हमें फ्यूचर काफी ब्राइट लगता है। कंपनी सबसे इंपॉर्टेंट है कि फोकस ऑन फिस्कल डिसिप्लिन एंड वैल्यू क्रिएशन। इसका मतलब है कि कैश बर्न कर रहे हैं लेकिन साथ में देख रहे हैं कि उसमें
कैश जनरेशन की पोटेंशियल है कि नहीं, और वैल्यू क्रिएट हो रही है कि नहीं उस केपेक्स से। सो हमें यहाँ पे ये सब काफी पॉजिटिव ट्रिगर्स दिख रहे हैं, इसलिए हम काफी बुलिश है रिलायंस इंडस्ट्रीज पे। इसका फेयर वैल्यू 2600 है आफ्टर excluding Reliance Jio Financial Services, which is already listed. That's all from my side. Hand over to Reni. Thank you, Sumit. Our next pick is from chemical sector, SRF. So SRF एक multi-business chemicals company है with three main categories of business. One is chemicals business, जिसमें specialty chemicals and fluorochemicals आता है. Second है packaging films business, जिसमें आपका जो packaging layers होता है for snacks and food items, वो आता है. एंड थर्ड कैटेगरी है टेक्निकल टेक्सटाइल्स बिजनेस, जिसमें टायर कॉट फैब्रिक्स, बेल्टिंग फैब्रिक्स जो होते हैं इंडस्ट्रीज में वो आते हैं. सो नाउ एसआरएफ हमारा टॉपिक है फ्रॉम केमिकल स्पेस. हमें ये स्टॉक इसलिए अच्छा लगता है बिकॉज ऑफ द लॉन्गर टर्म ग्रोथ आउटलुक फॉर इट्स केमिकल्स कैटेगरी. सो हमारे हिसाब से ये इंडस्ट्री टेलविंड से बेनिफिट करेगा. Besides SRF की जो टेक्निकल कॉम्पिटेंसीज है इन टू सेगमेंट्स, फ्लोरस स्पेशलिटीज एंड रेफ्रिजरेंट्स में, वो हमें कॉन्फिडेंस देता है ऑन द स्टॉक. बाय रेफ्रिजरेंट्स आई मीन जो फ्लूइड्स हमारे कूलिंग सिस्टम्स में यूज होते हैं लाइक एसी, फ्रिज एटसेट्रा. सो व्हाइल SRF का फर्स्ट क्वार्टर रिजल्ट सॉफ्ट था, जो एक्सपेक्टेड भी था, मैनेजमेंट एक्सपेक्ट्स steady improvement in the coming quarters. The softness was due to contraction in margins in the packaging films and technical textiles business, और weak summer season के वजह से भी demand affect हुई for the refrigerants. There is also demand weakness in pharma and agro industries, जो हमें लगता है कि short-lived है. Overall, traction भी strong लग रहा है, especially on the new projects front, and we continue to like the overall story. So currently हमारा buy rating है on the stock with target price of 2,730 rupees. That was our presentation on the strategy for the month. We will now open the floor for Q&A. Use this opportunity and drop your questions in the chat box. Let me start with the first question. So, first question is from Nitesh Singla. Just a second. So Nitesh Singla is asking for view on mid-cap IT stocks like Coforge, Persistent, L&T Technology Services and L&T Mindtree जैसे stocks for long term. Sumit can take this question. Yeah. So broadly, IT जो भी आपने मिड कैप IT कंपनीज का नाम लिया है, उसमें कुछ कंपनीज IT सर्विसेज में कैटर करती है और कुछ IT इंजीनियरिंग कंपनी का काम करती है. तो ब्रॉडली थोड़ा डिफरेंशिएशन है उन दोनों में. जो IT इंजीनियरिंग कंपनीज है, वहाँ पे ER&D स्पेस में काफी ग्रोथ हो रही है बिकॉज ऑफ ऑटोनोमस कार्स और ड्राइवरलेस कार्स. उधर काफी कोडिंग की रिक्वायरमेंट आ रही है, इसलिए वहाँ पे काफी ट्रैक्शन दिख रहा है. तो हमें लगता है कि उन सब में कंपनी में काफी पोटेंशियल है इन टर्म्स ऑफ डिलीवरी और ऑर्डर विन करने के लिए, बट वैल्यूएशन काफी एक्सपेंसिव हो चुके हैं ऑलरेडी. जैसे कि आपने LTTS के लिए पूछा, हमें लगता है वो बहुत महंगा है करंट वैल्यूएशन पे, इसलिए हम सेल रिकमेंड करते हैं उस पर विथ ए फेयर वैल्यू ऑफ 3,900 रुपीज. और जो मैंने आपको बताया ER&D स्पेस है, वो 10 से 12% ग्रो कर सकता है फॉर नेक्स्ट फ्यू ईयर्स. तो पोटेंशियल डेफिनेटली है, बट क्या वो करंट प्राइस में कैप्चर है? हमें लगता है काफी हद तक कैप्चर है. LTI माइंड्री की बात करें तो उस पर हमें लगता है कि वैल्यूएशन अगेन एक्सपेंसिव है. कंपनी में मर्जर के बाद में काफी सिनर्जीज भी क्रिएट हुई है, बट वो सब प्राइस्ड इन लग रहा है वैल्यूएशन में. इसके लिए हम रिड्यूस रिकमेंड करेंगे यहाँ पे, और विद टारगेट प्राइस ऑफ 4,900 रुपीज. अगर आपको बाय करना है तो आप परसिस्टेंट बाय कर सकते हैं विद एड रेटिंग, मतलब बाय ऑन डिप्स.
विद ए टारगेट प्राइस ऑफ 5,700 रुपीज। इसलिए हम काफी करंट मार्केट प्राइस काफी क्लोज है टारगेट प्राइस के लिए, इसलिए हम उस पर एड रिकमेंड करेंगे। जब मैं आपको ER&D की स्पेस बता रहा हूँ कि 10 से 12% ग्रो कर सकती है, तो डेफिनेटली कुछ स्टॉक तो आपको हमको बताना ही पड़ेगा जो कि जिसमें अभी वैल्यूएशन रीजनेबल लग रहे हैं हमें और ग्रोथ पोटेंशियल काफी ज्यादा है। तो अगर आपको बाय करना है मिड कैप IT इंजीनियरिंग कंपनी में, तो साइएंट एक कंपनी है जो कि आप बाय कर सकते हैं विद टारगेट प्राइस ऑफ 1,950 रुपीज। कोफोर्ज भी हमें वैल्यूएशन में एक्सपेंसिव लगता है, इसलिए हम उस पर सेल रिकमेंड कर रहे हैं। और लार्ज कैप में अगर किसी इन्वेस्टर को इंटरेस्ट है तो वो HCL टेक बाय कर सकता है विद टारगेट प्राइस ऑफ 1,290 रुपीज के, और इन्फोसिस भी बाय कर सकता है विद टारगेट प्राइस ऑफ 1,550 रुपीज के लिए। सो इन नटशेल बहुत सेलेक्टेड स्टॉक्स बचे हैं जहां पे वैल्यूएशन में कैप्चर नहीं हुआ है, तो स्टॉक स्पेसिफिक रहना पड़ेगा। और US में अभी भी कंसर्न्स है सो फार IT सेक्टर पे स्पेंड की बात है, प्लस जनरेटिव AI का कैसा इम्पैक्ट आएगा IT सर्विसेज के वॉल्यूम्स पे, वो देखने की बात है। सो बी सेलेक्टिव इन द स्पेस, ऑल कैन नॉट बी checked with the same lens, so be selective. Thank you, Sumit. Next question is for Shrikant sir. Shrikant sir, one participant is asking, at current levels, investors should look at which banks, PSU or private? Yeah, sure. I think, see, at this levels, when there is like some downturn or some correction in the market, and most of the people, they are talking about that now the credit of offtake is going to slow down and all. Based on that, if we just go through with the overall performance of the entire sector, then in that we feel that we need to look for those candidates or those ideas, stock ideas, which are um, uh, cheap in terms of their valuations. So if we just go through with the PSU as well as private banks, तो इन दोनों के अगर हम बास्केट ऑफ स्टॉक्स को देखेंगे तो यहाँ पे हमें लगता है कि PSU स्टॉक्स अभी भी काफी चीपली अवेलेबल है। प्राइवेट बैंक्स में नो डाउट अपसाइड अभी भी है, जैसे कि HDFC बैंक की अगर बात करें तो it was around 1620, 1650 levels. From there, all the way now it is back to the levels of 1580, where there is upside of 1900 based on its fundamental value, fair value. So definitely, yes, the upside is there. And if there is like someone who is very much cautious in terms of investing, I think he should look for adding HDFC Bank to the portfolio, because downside is very limited. Upside is definitely there. It will take time. It's a view of next 12 months. So 1900 रुपए के टारगेट्स हम देख सकते हैं आने वाले 12 महीने में, तो आपके पास डेफिनेटली HDFC बैंक तो होना ही चाहिए। बट अगर किसी को थोड़ा सा मीडियम टर्म का अगर व्यू रखना है, थोड़े हाई बीटा स्टॉक्स में अगर जाना है, जो एक जनरल लोगों के एक्सपेक्टेशंस होते हैं, तो वहां पे हमें लगता है कि PSU बैंक्स में फोकस किया जा सकता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लेके कैनरा बैंक और पंजाब नेशनल बैंक, ये तीनों में काफी अच्छी अपसाइड यहाँ से दिख रही है। नियरली 20-25% के रिटर्न्स हमें नजर आते हैं। पंजाब नेशनल बैंक की बात करें तो यहाँ पे हमें लगता है कि ये 78 के टारगेट्स दिखा सकता है इन नेक्स्ट 12 मंथ्स ऑफ टाइम। स्टेट बैंक की अगर बात करें तो 725 से लेकर 750 के नजर आते हैं टारगेट्स, और कैनरा बैंक की अगर बात करें तो वहां पे 400 रुपए के टारगेट्स नजर आते हैं। अगर इनके प्राइस टू बुक वैल्यू को देखें तो यहाँ पे ऑलमोस्ट दे आर अवेलेबल एट 1 टाइम्स टू 1.5 टाइम्स टू FY25 अर्निंग्स। तो ये भी काफी रिजनेबल है। यानी कि यहाँ पे भी अगर आप देखें तो अगर मार्केट में करेक्शन आता है तो यस, कुछ करेक्शन हो सकता है, बट अगर तेजी आती है तो जो एक स्पेसिफिक बाइंग इंटरेस्ट बनेगा वो इन स्टॉक्स में बन सकता है। बिकॉज इन लेवल से अगर मार्केट में करेक्शन आता है तो वैल्यूएशन बेसिस पे खरीदारी आएगी। लेकिन अगर यहाँ से अगर तेजी बनती ही गई अगर मार्केट में, तो जो एक्सपेंसिव स्टॉक्स है वहां पे जो इन्वेस्टर का ओवरऑल कॉन्फिडेंस रहेगा वो थोड़ा कम रहेगा। तो जो वैल्यूएशन टर्म्स में चीप स्टॉक्स हैं उनमें बाइंग आ सकती है, और इसी वजह से हमें लगता है कि आप PSU बैंक्स में कुछ डेफिनेटली इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। और इन तीनों में जैसे मैंने कहा, स्टेट बैंक, कैनरा बैंक एज वेल एज पंजाब नेशनल बैंक पे फोकस करें।
प्राइवेट बैंक्स में हमें लगता है करंट लेवल से HDFC बैंक हमारा टॉप पिक है और प्रेफर्ड पिक है। थैंक यू सर। सर आप एक गौरंगा का क्वेरी भी इफ यू कुड सॉल्व। सो शी इज आस्किंग सेल नेगेटिव है, सेल पर कोटक का नेगेटिव है बट इट इज इंक्रीजिंग रैपिडली, व्हाई? देखिए, तो इसमें 2-3 रीजन है और वो रीजन अगर आप देखिए तो काफी जेन्युइन है। मार्केट का जो मोमेंटम अगर आप ओवरऑल देखोगे तो वो काफी स्ट्रांग है, स्पेशली मेटल कंपनीज के लिए। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि चाइना में कुछ स्टिमुलस आए हैं। साथ ही साथ अगर हम हमारे मार्केट्स की अगर बात करें, GDP की अगर बात करें, तो वो काफी अच्छा बढ़ के आया है 7.8 की तरफ। तो ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है एज कम्पेयर टू अदर इमर्जिंग मार्केट्स। अगर इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म करेगी, GDP के नंबर्स अच्छे आएंगे और अगर उस GDP में अगर इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी अगर अगर बढ़ रही है, तो ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि जो मेटल स्टॉक्स है वहां पे परफॉर्मेंस हमें देखने मिलेगा। इसके अलावा अगर हम स्टील्स की बात करें तो स्टील प्राइसेस में हमने कुछ इस पर्टिकुलर महीने में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी देखी। लेकिन अगर स्पेसिफिकली स्टील अथॉरिटी की अगर बात करें तो इसके अगर आप डेट टू इबिटा को देखते हैं, जो एक इंडिकेट करता है कि इबिटा के सामने इसका डेट कितना है, अगर ये देखें तो दैट इज मोर देन 3 टाइम्स। और अगर ये मोर देन 3 टाइम्स है तो आप सोचिए कि इसका बर्डन हमेशा इसके प्रॉफिट के ऊपर बना रहेगा, एंड दैट इज नॉट ओनली फॉर दिस ईयर, इट इज फॉर नेक्स्ट 2 इयर्स। तो इसी वजह से हमें लगता है कि यहाँ पे डेफिनेटली यस, प्राइस एप्रिसिएशन हमें देखने मिल सकता है। लेकिन जो इसकी करंट पोजीशनिंग है, जो करंट डेट्स है इसके, और जैसे कि इसके और जो आने वाले कुछ सालों में जो ओवरऑल फोरकास्टिंग है वो यही है कि वो काफी सारे और भी प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है, जिसकी वजह से इस कंपनी का डेट भी बढ़ सकता है और इसमें एक्सपेंशन भी हो सकता है। तो ऐसे केस में मुझे लगता है कि यहाँ पे और भी कुछ अच्छे कैंडिडेट्स है या ऑल्टरनेट्स है या विकल्प है, जैसे कि जिंदल स्टील एंड पावर है या तो टाटा स्टील है। हमें लगता है कि इनमें और भी अच्छी इंप्रूवमेंट हमें देखने मिल सकती है। और नो डाउट कि ये दोनों स्टॉक अपने काफी फेयर वैल्यू के नजदीक आ चुके हैं, लेकिन हमें लगता है कि शायद आने वाले रिजल्ट्स में इनमें अपग्रेड्स भी देखने मिल सकते हैं। तो करंट लेवल से अगर कोई भी करेक्शन अगर आता है तो आई थिंक यू शुड लुक फॉर एडिंग स्टॉक्स लाइक टाटा स्टील एज वेल एज Jindal Steel and Power to your portfolio and not Steel Authority. Yes, if there are any investment, I think we should look for reducing to that. And because see, like a lot of people they stuck when the price was around 110, 120. तो इनके लिए एक अच्छा मौका है कुछ पोजीशंस को कम करें और जो आपके इन्वेस्टमेंट्स हैं आप जैसे मैंने कहा था टाटा स्टील और JSP में आप स्विच कर सकते हैं। या थैंक यू। Next query is from Sunil Maiti. He wants to know view on Tata Power, Tata Motors, ITC, and Motherson. So I think Purvi, Amit, and Arun can take this one by one. Yeah, so on Tata Power, we have a sell rating and the fair value is 200. So the reason being, if we see in FY23, the profits were much better because the imported coal prices were quite high. So this we've been seeing that it is coming off from Q1. And other negative thing that has happened also is that because of the increasing capex and working capital requirement, the debt has gone up, net debt has gone up. So taking all this thing into consideration, we have a sell rating on the stock and the fair value is 200. Okay, I'll take on Tata Motors and Motherson. So Motherson, there are actually two listed entities. We don't cover Motherson Sumi Wires, but I'm not sure which Motherson stock you're referring to, but I'll speak on the other one where we have coverage, which is Samvardhana Motherson International Limited. So there, if you look at overall, we believe that there's some, expecting that the near-term outlook looks to be gradually improving in the European Union. This specific company, which is Motherson International, Samvardhana Motherson International, this is mainly into the overseas business, and there we are seeing a little bit, gradual improvement happening in the European Union, EU geography, where we believe the company is quite strongly positioned to benefit. They also have a good strong order book with them, and as and when the demand continues to recover, we'll see impact of that flowing into their earnings, their revenues, margins, and earnings.
The other thing that could also be in favor of them is that the content per car is now improving. There too, the company we know has done multiple acquisitions in the past, and they continue to do a bit of cross selling. So, and apart from that, the content in that vehicle is also improving, so that should also help them grow faster than the industry. And apart from that, we are also seeing a lot of premiumization happening in the cars. The vehicles now are getting more premium products, so that too adds value and to the margins for the company. So right now we have an ad rating on Samvardhana Motherson with a fair value of around 105 rupees. The stock was up today around 4 to 5%. So from the current levels, the upside is very limited. So any declines in the stock can be used as an opportunity to add Samvardhana Motherson from a long-term investment perspective. On Tata Motors, overall, if you look at Q1 numbers, in Q1 we specifically saw the JLR performance seeing improvement. The cash flows were good, the margins improved, and we expect the JLR performance to continue to be good in FY24. However, in the domestic segment, we have seen a little bit of slowdown happening, especially on the volume side, both in the passenger vehicle and the commercial vehicle segment. So this year, we believe the domestic business growth, especially on the revenue front, could be a bit slow on the volume side. Further, we are also seeing increased competitive intensity in the Chinese battery electrical vehicle market as well. And there has been some market share losses in the domestic commercial vehicle segment for Tata Motors. So these are a couple of concern areas for us in Tata Motors. At this point in time, we have a sell rating. The stock has come down from a previous market price when we had recommended this sell. But however, we'll wait for another opportunity. Any declines, we'll reconsider our view. But at this point in time, we have a sell with a fair value of 600 rupees on Tata Motors. Yeah. I'll speak on ITC. We have an ad rating on the stock with a target price of 467. ITC का जो बिजनेस है काफी स्ट्रांग है. Q1 में डिसेंट प्रिंट दिया था. सिगरेट रेवेन्यू ग्रो हुआ था 11% से with 8% वॉल्यूम ग्रोथ. Revenue growth in FMCG was around 16%. Hotels also steady quarter था. पेपर बोर्ड थोड़ा सा वीक था बट डिसेंट. सो ओवरऑल बेसिस हम लोग को लगता है कि आईटीसी का जो हर एक सेगमेंट है वो काफी स्ट्रांग है. Especially key cigarette business is growing at a very stable growth rate, and FMCG, which has started contributing a lot, is showing super normal growth. सिगरेट में जो टैक्सेशन का इशू है वो हमारे पीछे है. आईटीसी हमें लगता है कि डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ और एबिट ग्रोथ दिखाएगा सिगरेट में इन FY24 गिवन द स्टेबल टैक्स रेजिम. होटल बिजनेस को डीमर्ज किया जा रहा है. आफ्टर डीमर्जर हमारा एक्सपेक्टेशन है कि आरओसी और रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल इम्प्रूव हो जाएगा. जो करंट लेवल है 437 का, वो एट दिस लेवल ऑल्सो द स्टॉक ऑफर्स a good combination of healthy growth, as I discussed, dividend yield of over 4%, or inexpensive valuation of 22 times FY25 earning, which is at almost 50% discount to larger peers in the FMCG player system. So we have been consistently positive on the stock in the past, and we will continue to be positive. And currently we have an ad rating with a target price of 467. Thank you. Next question is for Purvi on pharma sector. Purvi, can you please share your views on Laurus Labs and Mankind Pharma? Sure. Firstly, I'd like to thank Renu ji for listening to and following our webinar so closely and asking the question again. So coming to your question, Laurus पे अमली हमारा व्यू वही है, reduced rating है. Given the steep valuation, अगर हम स्टॉक को देखें तो अभी भी वो 27 टाइम्स FY25 अर्निंग्स ट्रेड कर रहा है. तो हमें ये लगता है कि इट्स क्वाइट अ स्टीप वैल्यूएशन कंपेयर्ड टू द frontline companies like Cipla and Sun, which are trading at say 22 or 23 times FY25 earnings. So हमारा व्यू वहाँ पे अभी भी चेंज नहीं हुआ है. और जहाँ तक मैनकाइंड की बात है तो वहाँ पे वी हैव अ एड रेटिंग and the fair value is around 2025 rupees, and we feel that the company being 100% domestic focused can grow with a high double digits, that is 15 to 16% over the next 2 years. So we have an ad rating on the stock. Thank you, Purvi.
Now, due to time constraint, I'll take one last question. Um, one participant is asking, your webinar was very nice. Okay, thanks. And the only thing, okay, any views on your views on IT sector, specialty chemicals and metals? So I think for IT and metals, Shrikant sir and Sumit can answer. On specialty, I'll give a quick overview. So in specialty chemical space, demand weak lag raha hai for now, and however, companies predict a recovery only in third, fourth quarter of FY24. However, there has been a fairly broad-based uh, recovery in prices of several basic chemicals in China in recent weeks, driven by factors including rising crude oil prices, production outages at certain factories, announcement of stimulus by Chinese government, and depletion of inventories with customers. However, the recovery may prove short-lived and amid expected capacity additions in China. So if Shrikant sir would like to add anything, I would hand it over to him. Okay. Yeah, I think see for all this particular chemical sector, we observed that most of the stocks they have fallen from their highs mainly because of destocking of the inventory. Also, there are like couple of reasons, as Rini mentioned, that from China the supply can come, and if that happens, then all these companies will remain under pressure. So we need to see that how actually they perform in next 1 or 2 quarters. But if really like somebody is interested in buying the chemical sector because most of the stocks have fallen from their highs, then we are of the view that we should look for buying and holding those stocks which are really good in terms of their overall pedigree. I mean to say in terms of their overall management and the performance of last several years. So in that category, we like SRF, on which we already discussed. We also like PI Industries as well as Navin Fluorine. From the agrochemical basket, we like Sumitomo Chemicals. So these are the stocks on which like we have buy ratings, and I think we should look for adding these stocks if there is any correction in the market, because this particular sector is also going to perform in next 12 to 18 months of time. It's not that here like you cannot buy and hold with a very short term view, because this overall sector is going to remain highly volatile. The overall news flow is highly uncertain, as Rini mentioned. So it is always like better to buy those companies which are really good. Even I can say Clean Science is also a very strong bet to buy and hold, but currently it is very close to its fair value. So if there is any correction because of let's say correction in the overall space, then we should look for adding Clean Science also to the portfolio. But at these levels, we need to be more and more stock specific. So we need to be more choosy in terms of buying. You cannot buy all the stocks, but it is up to you, like which one is like more preferred for you. Either पकड़ लेते हैं कि पीआई इंडस्ट्रीज अगर अच्छा लग रहा है तो आप उसे ऐड करते जाइए, अगर आपको नवीन फ्लोरिन अच्छा लग रहा है तो आप वो ले सकते हो. और निफ्टी आईटी की अगर बात करें तो सुमित ने ऑलरेडी इस पर्टिकुलर सेक्टर के ऊपर बात की है. मुझे लगता है कि आज स्पेसिफिकली कुछ बाइंग इंटरेस्ट आईटी इंडेक्स में हमने देखा है. आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम 31,700 के टेक्निकल लेवल को आईटी इंडेक्स ने क्रॉस किया है. एंड इफ यू सी द एक्टिविटी इन एचसीएल टेक्नोलॉजीज या टेक महिंद्रा देखे या विप्रो जो सेवरल मंथ से अंडर परफॉर्म कर रहा था, something I think somebody must have taken interest in the market. That's the overall view based on the price formation. Fundamentally अगर देखा जाए तो most of the stocks are very close to their fair values, so it is better to stay away. Yes, in this month see like क्या होता है ना कि जब बड़े इवेंट्स होते हैं मार्केट में, जैसे कि फेड की मीटिंग है, और इस बार फेड की मीटिंग के पहले जो यूएस इकोनॉमी से जो डेटा आ रहा है वो एक सपोर्ट कर रहा है कि शायद इस बार रेट हाइक ना हो. अगर गलती से अगर वो कुछ इस पर्टिकुलर मीटिंग में ऐसा इंडिकेशन देते कि शायद रेट कट भी हो सकता है, तो उस वक्त क्या होगा कि जितनी भी आईटी कंपनीज है उनमें एक अच्छी तेजी बनेगी. ओके, ये जस्ट मैं थॉट दे रहा हूं. इट्स नॉट दैट कि ऐसा हो सकता है, बिकॉज दे हैव ऑलरेडी क्लियरली मेंशन कि ये जो पॉज है वो फॉर अ लॉन्गर टाइम चल सकता है. बट अगर आप डेटा देखें
तो या तो उनका जीडीपी का डेटा देख लीजिए, या तो अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा देख लीजिए, या जॉबलेस क्लेम का डेटा देखिए। ये सभी जितने भी डेटा है वो एक तरफ इंडिकेशन कर रहे हैं कि एटलीस्ट रेट पॉज तो होगा। प्लस इस महीने में अगर हम लोग और कोई अगर बड़ा इवेंट देखने वाले तो वो है स्पेशल सेशन फ्रॉम इन दी पार्लियामेंट। अगर रहा तो इसके पीछे भी हम मार्केट में काफी बड़ी वॉलेटिलिटी देखेंगे। सो ब्रॉडली हमें लगता है कि इस मार्केट में इस पर्टिकुलर मंथ में कई सारे बड़े बड़े इवेंट्स आने वाले हैं, और उन इवेंट्स को अगर सरपास करते हुए अगर मार्केट ने 20,000 के लेवल्स को अगर क्रॉस किया तो ये मार्केट के लिए बहुत ही बड़ा पॉजिटिव होगा। प्रीवियस मंथ में देखेंगे तो एफ आई सोल्ड नियरली वॉट 17-18,000 crores, nearly 20,000 crores. बट उसके अगेंस्ट अगर आप देखें तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस बॉट नियरली 30,000 crores. What it indicates after February 2023 फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ है कि एफ ने कुछ बिकवाली की है मार्केट में, लेकिन उसके सामने डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने उतना ही बड़ा पैसा लगाया है। और जैसे कि अमित ने अभी बताया था कि एसआईपी नंबर्स 15,000 करोड़ के करीब जा रहे हैं। अगर ये नंबर्स अगर ऐसे ही रहे, रोबस्ट नंबर्स रहे, तो हमें लगता है कि जितनी भी एफआई की सेलिंग है वो एब्जॉर्ब होती रहेगी, मार्केट में जो डाउनसाइड रहेगी वो लिमिटेड रहेगी। और अगर मार्केट में अगर अपसाइड आती है बिकॉज ऑफ सम पॉजिटिव रीजंस, जैसे कि पकड़ लेते हैं कि फेड अगर इंडिकेशन देता है कि वो रेट कट करेगा, अगर ऐसे कुछ बड़े इवेंट्स अगर आते हैं पॉजिटिव बन के, तो फिर हमारे मार्केट्स के लिए वो काफी पॉजिटिव रहेगा। निफ्टी की अगर स्पेसिफिकली अगर लेवल बेस्ड अगर बात करें तो मुझे लगता है कि बहुत ही सिंपल है। 19,650 ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है मार्केट के लिए। इन लेवल्स के ऊपर हम मार्केट्स में जो अपवर्ड एक्टिविटी देखेंगे वो 20,000 तक निफ्टी को लेके जा सकती है। सो 19,650 ये मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। ऑन द डाउन साइड, ऑन द अदर साइड अगर देखें तो 19,200 के नीचे मार्केट में बड़ा करेक्शन आ सकता है। तो इसी वजह से इन दोनों लेवल्स पे फोकस करें और इसी के ऊपर अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। ओवर टू यू। Thank you, sir. With this, we have reached the end of the webinar. Hope our participants liked our webinar. Please share your feedback in the comment box so that we can bring you even more interesting insights from research desk. And just a quick reminder before we wrap, do follow us on our social channels, Telegram, Instagram, and Twitter if you haven't already, for regular research updates and stock ideas. Thank you. Thank you. Recording stopped.